हमारी फर्स्ट एक्टिविटी क्रिसमस ट्री एक्टिविटी के लिए चाहिए हमें ग्लेस पेपर, स्टिकर, सीजर, आइसक्रीम स्टिक्स और कुछ भी डेकोरेटिव। हम आइसक्रीम स्टिक के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन पेपर की कटिंग कर देंगे, फिर पेस्टिंग और डेकोरेशन के लिए बेबी को दे देंगे। आप स्क्रू में भी कटिंग करके बेबी को पेस्टिंग के बाद कटिंग के लिए दे सकते हैं, जैसे मैंने किया है। हमारी दूसरी एक्टिविटी है क्रिसमस ट्री फोल्डिंग एक्टिविटी। क्रिसमस ट्री फोल्डिंग एक्टिविटी में हम कंस्ट्रक्शन पेपर को स्क्वायर में काटकर इस तरह कटिंग कर लेंगे और बाद में इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अपने बेबी को डेकोरेशन के लिए दे देंगे सारी एक्टिविटी करने के बाद। हमारी थर्ड एक्टिविटी है बेबी स्नोमैन कार्टून पेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हमें चाहिए बेबी की पेज, कंस्ट्रक्शन पेपर, सीजर, रेड रिबन, क्राफ्ट बटन, ग्लू और कोई भी डेकोरेशन के लिए। सबसे पहले पेपर पे स्नोमैन बनाकर और बेबी की पिक लगाकर उसे कॉटन पेस्टिंग के लिए दे देंगे। कॉटन पेस्टिंग के बाद आप उसे कटिंग करके ब्लू पेपर पर चिपकाकर उसे डेकोरेट कर देंगे। और हमारी लास्ट एक्टिविटी है स्नोफ्लेक्स पेंटिंग और बहुत ही इजी एक्टिविटी, जिसके लिए हमें सिर्फ चाहिए ग्लू, पेंट कलर, पेंट ब्रश, पेंसिल और सॉल्ट। आप पहले पेपर पर स्नोफ्लेक ड्रॉ करके उसमें ग्लू लगाकर सॉल्ट स्प्रेड कर देंगे।